नमस्ते। पिछले बार हमने नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी। अब हिमालय में ही हम दूसरे साइट पे जाएंगे, आसाम स्टेट में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क का नाम मानस इस वजह से है क्योंकि यहाँ से मानस रिवर फ्लो होती है और साथ ही साथ स्नेक गॉडेस मानसा, इस पे भी ये नाम दिया गया है। चलो तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या ये पहले से नेशनल पार्क था? नहीं। 1928 के पहले ये एक रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था। 1928 में ब्रिटिश रूल के अंडर इसे गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। फिर 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया। इसका एरिया था अराउंड 360 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपको पता नहीं होगा तो हमने इस पे भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो मानस नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया। टाइगर रिजर्व का एरिया था 2837 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। 1989 में इसे बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 360 स्क्वायर किलोमीटर्स की, ये बड़े टाइगर रिजर्व का एक कोर पार्ट था। 1990 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया। फ़र्क क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में रूल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती है। इसके बाद 2003 में अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट मानस नेशनल पार्क को एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया और 2005 में जो नेशनल पार्क था इसका एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर्स कर दिया गया। अब आप इस एरिया को इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स और सेंचुरीज डिक्लेयर करने के पीछे आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कितना सिग्निफिकेंस होगा। तो चलो अब जान लेंगे कि इस मानस नेशनल पार्क का सिग्निफिकेंस क्या है। So, what is its significance? The Manas National Park holds 6 different designations. It is a World Heritage Site declared by the UNESCO. It is a national park, a tiger reserve, and an elephant reserve declared by the Indian government. It is a biosphere reserve declared by the Indian government and also identified under the UNESCO's MAB program, that is the Man and Biodiversity Program. It is an important bird area as well. The important bird areas are identified based on a criteria list given by BirdLife International, and Manas National Parks falls under one of these important bird areas. It has the highest legal protection and a strong legislative framework. It falls under 3 acts. First, the Indian Wildlife Protection Act of 1972. Second, the Indian Forest Act of 1927. And third, the Assam Forest Regulations Act of 1891. Because of this, it has benefits of support from both the government and regional levels and has conservation organizations based on national as well as international levels. In the previous videos, we have seen what is a national park, what is a tiger reserve or a World Heritage Site. But there is a new word that we have come across in this video, and that is the Biosphere Reserve. So what is a Biosphere Reserve? So Biosphere Reserve जो होता है, it is a larger area as compared to a national park or a wildlife sanctuary. Both national park and wildlife sanctuary are mainly dedicated to animals, to the biodiversity and the natural belongings of that place. Whereas as a biosphere reserve, वो जगह में ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की कम्युनिटीज़ कौन सी है और उन कम्युनिटीज़ का क्या रोल है, क्या इंटरैक्शन है उस इकोसिस्टम के साथ, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इन इंडिया देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स and UNESCO's Man and Biosphere program has identified 11 out of these 18 biosphere reserves, one of which is Manas National Park. Manas National Park has a huge biodiversity. It has 60 mammal species, of which 22 are India's most threatened mammals.
It has 42 reptile species, 7 amphibian species, and 500 bird species, of which 26 are globally threatened. It has a huge diversity of flora as well. We'll take a look at some of the pictures in our next section. So talking about the flora, the national park is home to almost 543 plant species. And you can see a lot of grassland habitat over here, in which mostly the terai and bhabar types of grasslands can be seen. According to the National Wildlife Act, which was set in 1972, many species were listed as the Schedule 1 species. The species are the ones which need extra protection and which are more important in the wildlife. So, out of the total species listed, 21 of the species of the Schedule 1 class are found in Manas National Park. And some of those species are, of course, the first one on the list is the Royal Bengal tiger. Then there's one-horned rhino, golden langurs, golden cats, hispid hare, Indian gaur, and the clouded leopard. Apart from this, we can also find the Hulok gibbons in this region. And this place is known for the original strains of the wild water buffalo. अब ओरिजिनल स्ट्रेन्स यानी जो स्पीशीज़ है उसका प्योर ब्रीड कैन बी सीन इन वाइल्ड इन दिस रीजन. And there are lots of water buffaloes you can find in the Manas National Park. Amazing birds like the Bengal florican, the red-headed trogon, hooded pitta, oriental pied hornbill, green-billed malkoha can be seen in this national park. And these are other few birds that you can find in the region. The endemic Assam roof turtle can also be seen over here. And apart from that, you can also find lots of gharials in the Brahmaputra river. That was it for this week's video about the Manas National Park. I hope you liked the video and you gained a little bit of insight about the Manas National Park. And also we would like you to share any pictures, videos or stories that you have about this Manas National Park. You can comment over here or you can mail us on the email ID that we have put in the description below. And don't forget to like, share and subscribe to the channel, because this is not it. There are more such natural heritages that we would be discussing in the coming videos. So till then, stay tuned, stay safe and take care of yourself. We would like to thank Baishakhi ma'am for sharing amazing pictures clicked by her. We have put her Instagram profile link in the description below, so you can go there and check out the amazing work by her.